Hi guys, how are you? I hope you all are doing really well. Welcome to another video. So today I am making Chacharoni black bean sauce ramen. I hope I am pronouncing it correctly. So let's make it. So it comes out with 2 sachets. First of all, we boil the water and then add noodles inside the water and break the noodles into small pieces and then stir. Okay, now add some dry vegetables inside the noodles and stir it well. Actually, most of the ramens are so spicy, so that's why I'm adding few drops. So here you can see I'm adding some chaat masala and adding some soya sauce because I want to make it more delicious. And trust me guys, these two ingredients make it more delicious. You must try it. ओके नाउ यू कैन सी आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो रहा है और दूसरा ये कि बॉयल होने के साथ हम इसमें सॉल्ट और जो सॉस रह गया था सारा डाल दिया बिकॉज ये बिल्कुल कम स्पाइसी है, दूसरे रामेन की तरह स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सॉस डाला, लेकिन इसमें नमक कम होता है इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर डालिएगा और अब इसको और बॉयल होने दें ताकि इसका अच्छे से सूप बन जाए। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लुक है और यकीन करें ना इतना स्पाइसी है ना कुछ। आप इसमें और मसाले डाल के अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको खा सकते हैं, बना सकते हैं। और सूप भी बड़ा मज़े का बना था, आप देख सकते हैं कितना जूसी किस्म का सूप बना है और अच्छे से वो नूडल्स भी बॉयल हो गए हैं। सूप और नूडल्स ओवरऑल दूसरे रामेन के मुकाबले में मुझे ये रामेन बहुत पसंद आया and it really worth it for second buy. You definitely try it. Thank you for watching and please like and subscribe to my channel. Thank you.